Hi everyone, welcome to my channel Magma Umar and you're watching Code with Umar series. This is the third program of our Python programming series where we will be looking into how to find the sum of n natural numbers. So without further ado, let's get started. अच्छा तो कोडिंग करने से पहले हम हमारे प्रोग्राम को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं how we have to develop this program. That's the main question, right? Okay. Let us assume that a user enters an input value which is 3. Okay. Now we have to calculate the sum of natural numbers up to 3, which means from the starting point of the natural numbers. Natural numbers start होते हैं from 1, 1, 2, 3. तो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट अप टू 3 तक जितने भी नंबर आते हैं उन सबको ऐड अप करके रिजल्ट बताना है. तो अभी यूजर तो वैल्यू देगा 3, राइट? तो वी कांट स्टार्ट फ्रॉम 3. वी हैव टू कम डाउन फ्रॉम 3. यू गेट इट? सो इंस्टेड ऑफ असेंडिंग वी आर गोना डिसेंड. तो अगर हम 3 से डिसेंड करें विल गेट 2 एंड देन विल गेट 1. एट लास्ट विल गेट 0. 0 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट जीरो ऐड होने से या ना ऐड होने से हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वी आर स्टिल गोना गेट द करेक्ट आंसर. ओके. सो अब ये बात तो क्लियर है कि हमें इसे डिसेंड करना है वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन. ऑल्सो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट ईच टाइम व्हेन इट डिसेंड्स और डिक्रीमेंट्स, राइट, वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द सम, and that sum should be stored somewhere in a variable that we have created. Every time the value of the user input decrements, the sum should be updated. तो मान लो कि है ना, यूज़र ने 3 एंटर कर दी वैल्यू फर्स्ट. ओके. तो उसके बाद 3 जो है ये हमारे एक सम वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, राइट? आफ्टर दैट फिर से हमारा यूज़र इनपुट डिक्रीमेंट होगा, 2 पर डिक्रीमेंट हो जाएगा. नाउ दिस 2 विल गेट एडेड टू द सम वेरिएबल एंड देन अगेन फिर से सम वेरिएबल अपडेट हो जाएगा. ओ बन जाएगा 3 + 2 दैट इज 5. and after that again the user value will be decremented by 1 and then it will become 1, right? तो अब ये जो 1 है हमारा डिक्रीमेंट हुआ, ये जो है हमारे सम वेरिएबल में जाएगा एंड देन अगेन जो प्रीवियस वैल्यू थी सम की दैट इज 5, इट विल गेट अपडेटेड. 5 + 1 6. तो फाइनली वी आर गोना गेट आवर रिजल्ट. तो वो जो सम जो है वो प्रिंट होकर आएगा. तो लेट्स सी ये हम कोडिंग में कैसे कर सकते हैं. So first of all, I will just take an input from the user. So I'm creating a variable n, int input, and I'm gonna type a message, enter a number. Right now, okay, the condition for a number to be a natural number is that it should be above 0, right? It should be greater than 0. So अगर यूज़र ने यूजर्स 0 से नीचे वाली नंबर दे दी, तो it should give an invalidation that it is not a natural number. Please enter a positive natural number. So for that we are gonna write a code. So if n is less than 0, print please enter a positive natural number. Right. Now else part is our main part. uh, Before writing the iteration part, which means the loop लिखने से पहले I'm just gonna create a variable outside of the loop, that is sum, to keep track of the sum each time the user value decrements. So sum will be assigned 0 initially, and after that we are gonna use our while loop. Now while loop, when should a while loop be used? Because यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी, द यूजर इनपुट वैल्यू, unless and until it is greater than 0, then only it should keep on iterating. अगर यूजर ने माइनस नेगेटिव वैल्यूज दे दी, देर इज नो चांस वी कैन इवन कैलकुलेट द नेचुरल नंबर्स. तो unless and until the value is greater than 0, that times we can get to know how many iteration should take place. So what we'll do here is n, while n is greater than 0, it should iterate. Now how it should iterate?
First of all, I said that we are gonna, every time it iterates, whether it is increment or decrement. In this case, we are going to use we are going to decrement the user input value. So every time the user input value decrements, we have to update our sum. So how I will be writing here is sum plus equals n. तो what मतलब इसका मतलब क्या है? What it means is that it is nothing but sum equals sum plus n. तो ये जो लाइन है, इतना इतना जो पार्ट देख रहे हैं आप, वही ये है. मैंने बस इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन सम, आई जस्ट यूज्ड प्लस इक्वल्स. ऑलराइट. So what will happen here is each time the value of n decrements, it's gonna get assigned to the variable sum and sum will be updated. Right. Now next, here comes the part to decrement the user input value. So we'll decrement it by 1, right? So n minus equals 1. So this also means n equals n minus 1. So instead of this, I'm writing it like this, n minus equals 1. And now to print our result, so I'm just gonna delete this to avoid any confusion. Right. Now we have come out of the loop, while loop. Okay, या while loop जो है बस इतना 3 लाइनों का ही है. अब इसके बाद हमें है ना while loop के बाहर हम कोड लिखेंगे, but it should be inside the else. So print statement, the sum of n natural numbers is space, okay, comma sum, right? So our sum will be printing along with the message that the sum of n natural numbers is, or you can just delete this n. Okay, now it's good, and let's try this out. All right. Enter a number. We can enter 5. That will mean 1 plus 2 plus 3 6 plus 4 10 plus 5 15, right? So if I enter 5, yes, the sum of natural numbers is 15. So let's run it again. 4 10. Okay, excuse me. All right. So our code is working perfectly and there is no error in it. तो यही है हमारा logic. This is how we are gonna create a program to find out the numbers, the sum of n natural numbers in Python. And I hope ये आपको program completely समझ में आ गया है. And of course, if you have any doubts, feel free to ask me in comments. मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू प्रोग्राम के साथ एक न्यू वीडियो में. Till then, take care. Goodbye.